नमस्कार दोस्तों, एक्सेल की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से डेटा एंट्री से लेकर फॉर्मूलाज तक सब कुछ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेल आखिर है क्या। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल हम डेटा को व्यवस्थित करने में करते हैं, इसीलिए और स्कूल्स में इसका इस्तेमाल होता है। सबसे ऊपर आप टाइटल बार देख सकते हैं। इसके नीचे रिबन है जिसमें कई टूल्स हैं। यहाँ नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार होते हैं। वर्कशीट एरिया में रोज और कॉलम्स होते हैं और नीचे आप शीट टैब्स देख सकते हैं। अब एक्सेल की स्क्रीन को ध्यान से समझते हैं। यहाँ आपको सबसे ऊपर रिबन दिखाई देता है, नीचे आपको कॉलम्स और बाईं तरफ रोज दिखेंगी। इनके मिलने से जो बॉक्स बनता है उसे सेल कहते हैं। सेल देख सकते हैं। अब एक छोटा सा डेटा बनाते हैं। सेल्स में नेम, एज और सिटी लिखेंगे। अब इनके नीचे कुछ नाम डालते हैं, जैसे राहुल, अमित और नेहा। इस तरह एक्सेल में डेटा तैयार होता है। First, we select the heading, bold and center the text. Apply borders to the data. Now, increase the column width. See, it's a professional table. Formulas are the most important part of Excel. To find a total, use the sum formula, starting with an equal sign, like this. For more, these four are used a lot. A practical mark sheet. We enter this name and marks. We calculate the total marks widths. Then we calculate the average. Excel is. Now let's learn sort and filter. Filter helps you find quickly. Sort arranges data in order. For example, lowest marks. See only the data you need. Let's learn Excel shortcuts. Ctrl-C copy, Ctrl-V paste, cut, Ctrl-Z undo, Ctrl-S save. These keys make your work faster. Memorize them to become a pro. So friends, we understood Excel, we learned screen, rows, columns. If useful, then like the video, subscribe and share this topic. See you in the next topic. Thank you.